Hello guys, welcome to Goroda Academy. Fly like an eagle into IT industry. Today's topic is variables in Postman or in API testing. What are the different types of variables present in the API testing? We will see in today's topic. Let's start. Just I given one picture. In that picture you will able to understand the different types of variables. There is a local variables, data variables, environment variables, collection variables, global variables into Postman. We will see in picture, you will see that the scope, the local variable scope is very less, and the global variable scope is very high. We will see the definition, the meaning, the importance and the scope of each and every variable. Okay, variables. First we will going to see what is meant by variables. A variable is a symbolic representation of data that enables you to access a value without having to enter it manually wherever you need it. This can be useful if you are using the same values in multiple places. इसका मीनिंग क्या है कि हमें एपीआई टेस्टिंग में अपना बेस यूआरएल हो गया, अपना जो एथोराइजेशन पास करते हैं, एक्सेस टोकन हो गया, एपीआई की हो गया और कुछ डेटा हो गया, रिक्वेस्ट आईडी वगैरह हो गया, वो हम बार बार यूज करते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट में. बेस यूआरएल हो गया, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, तो उसको हमें वेरिएबल के फॉर्मेट में हमें सेव करना है और उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट में कैसे यूज करना है. जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लाइक ग्लोबल वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल, कलेक्शन लेवल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, डेटा वेरिएबल. We will see one by one how we can use and how the different uses of that particular variables and their scopes we will see one by one. Okay, first is a global variable. Global itself explains that it is accessed, its scope is over global level. Okay, and the definition is global variable enable you to access data between collections, requests, scripts and environments. Global variables are available throughout a workspace. Since global variables have the broadest scope available in Postman, they were well suited for testing and prototyping. In later development phases use more specific scopes. तो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो उसके नाम में उसका मीनिंग है कि ग्लोबल. ग्लोबल मीन्स पोस्टमैन में हम एक वर्क प्लेस बनाते हैं, वर्क प्लेस उसके अंडर कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन के अंडर हम डिफरेंट एपीआई रिक्वेस्ट ऐड करते हैं. तो जो ग्लोबल वेरिएबल जो हम सेट करते हैं वो पूरे वर्क प्लेस में किसी भी कलेक्शन के अंदर उस वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ग्लोबल वेरिएबल है. और इसका स्कोप भी इसके नाम की तरह ग्लोबल लेवल पे है. वर्क पेज के अंदर जो भी होगा, जितने भी कलेक्शन होंगे, डिफरेंट टाइप जितने भी रिक्वेस्ट होंगे, उनके अंडर इस जो भी की होगी उसका जो भी वैल्यू हमने सेट किया होगा वो वैल्यू हम फेच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट लेवल वेरिएबल. तो इसके नाम में ही है कि एनवायरमेंट के अंदर, स्पेसिफिक एनवायरमेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं. इसका डेफिनेशन क्या है? एनवायरमेंट वेरिएबल्स एनेबल यू टू स्कोप योर वर्क टू डिफरेंट environments. For example, local development versus testing or production. One environment can be active at a time. If you have a single environment, using collection variables can be more efficient, but environments enable you to specify role based access levels. तो बेसिकली क्या होता है, एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स होते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है, यूएटी एनवायरनमेंट होता है. तो जो भी हम तो जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, डेटा होता है, वो अलग अलग होता है. अभी
बेस यूआरएल का ही एग्जांपल लिया तो बेस यूआरएल में अभी स्टेजिंग का यूआरएल होगा तो अपने डोमेन के साथ में उसमें स्टेजिंग रहता है, और जो प्रॉड का रहता है तो उसमें स्टेजिंग नेम नहीं रहता है। यूएटी रहेगा तो उसमें यूएटी होगा। तो इस तरह से जो जो भी अपना डिफरेंट डेटा हो, चेंजिंग डेटा रहता है तो हम वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट लेवल पे वो डेटा हम सेट करेंगे। अभी स्टेजिंग का है तो स्टेजिंग का जो भी डेटा होगा तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में वो सेट करेंगे। तो स्टेजिंग के जितने भी कलेक्शंस होंगे, स्टेजिंग का जितना भी रिक्वेस्ट होगा उसके अंदर हम वो डेटा यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक की टाइप करके। तो वैसे प्रोडक्शन के लेवल पे सेट करेंगे, यूएटी के लेवल पे सेट करेंगे, इस तरह से हम एनवायरनमेंट लेवल पे सेट करके वो यूज कर सकते हैं। अगर वो हम इन लाइव एग्जांपल में, लाइव डेमो में वो देखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट लेवल पे कैसे सेट करके कैसे यूज होता है। इसका अभी एनवायरनमेंट लेवल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए होता है, ये ग्लोबल लेवल पे नहीं होता है। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का डेटा। नेक्स्ट एक कलेक्शन वेरिएबल, तो इसके नाम के अंदर ही हमें मीनिंग मिलता है कि कलेक्शन लेवल पे हम डेटा वेरिएबल सेट करते हैं, तो कलेक्शन के अंदर ही ये डेटा हम यूज कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है, कलेक्शन वेरिएबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द रिक्वेस्ट इन अ कलेक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स। कलेक्शन वेरिएबल्स डोंट चेंज बेस्ड on the selected environment. Collection variables are suitable if you are using a single environment, for example for auth or URL details। तो इसका स्कोप है जो कलेक्शन लेवल तक ही स्कोप है। तो इसमें क्या है, हम पर्टिकुलर कलेक्शन लेवल पे वेरिएबल जो है वो सेट करते हैं की एंड वैल्यूज, एंड वो जो डेटा है वो उसी पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर ही हम पेज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अगर दूसरे कलेक्शन में गए और वो की डाल के हमने वो डेटा पेज करने का ट्राई किया तो वो डेटा नहीं आएगा उसमें। तो इसका जो स्कोप है वो पर्टिकुलर कलेक्शन के लेवल तक ही है। नेक्स्ट है वो डेटा वेरिएबल्स। डेटा वेरिएबल्स कम फ्रॉम एक्सटर्नल CSV एंड JSON फाइल्स टू डिफाइन डेटा सेट्स यू कैन यूज व्हेन रनिंग कलेक्शंस विद न्यूमैन और द कलेक्शन रनर। डेटा वेरिएबल्स हैव करंट वैल्यूज विच डोंट परसिस्ट बियॉन्ड रिक्वेस्ट और कलेक्शन रन। तो डेटा वेरिएबल्स जो है वो हम न्यूमैन से जो कमांड लाइन से जो यूज करते हैं ना, एपीआई टेस्टिंग करते हैं और एपीआई रिक्वेस्ट हिट करते हैं CLI से, तो उस टाइम हम डेटा वेरिएबल्स यूज करते हैं। और लास्ट है वो लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर टेम्पररी वेरिएबल्स दैट आर accessed in your request keeps. Local variable values are scoped to a single request or collection run and are no longer available when the run is complete. Local variables are suitable if you need a value to override all other variables scopes but don't want the value to persist once execution has ended। तो लोकल वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए सीमित रहता है। जो अभी एक मैंने सपोज एक रिक्वेस्ट लिया, पोस्ट का रिक्वेस्ट लिया, तो उसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल सेट किया, तो उसका जो स्कोप है उस पर्टिकुलर पोस्ट मेथड के अंदर ही या पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ही सीमित रहेगा। तो वो किसी और रिक्वेस्ट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे। अब उस वेरिएबल्स का लाइव डेमो हम पोस्टमैन के जरिए हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, नाउ वी विल सी द डेमो। फर्स्ट, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, गो टू द एनवायरमेंट्स। In environment we have three environments: global environment, production that is the global variables, or you can call it as an global environmental variables, anything। तो first global variables। Okay, in global variables what we set, client ID and client secret, two variables we set on a global level। Okay, coming to the production environment,
Okay, this is our production environment. In production environment, what we set? Bearer token and API key, and the value is what value we set for that particular variable is prod. Okay, and coming to the staging environment. Okay, in staging environment we set same variables, bearer token and API key, and value is different. In production environment we set the value is prod, and in staging environment we set the value is different, EFG, SH and WAE, like that. Okay, now go to the collections. Okay, I am created two collections here. Okay, in previous video we see how to use the live APIs of the Spotify application. We will see in previous video. Here I created two collections, one is chapters and one is Spotify albums. Now we will see one by one. Here Spotify album, I already set one variable ID and given the name Garuda1. This is a collection variable. Okay, now I will show you the scopes of the all types of variables. Okay, now go to the bearer token generation API request. I will show you the difference. Okay, here ID is set at global level. I used ID here. Okay, just cursor over on that, you will get the value ID Garuda1. We set this at collection level. Okay, ID Garuda1. Now I will go to the another collection, that is chapters. Okay, in under chapters there is one request, get request. In get request, I will try that to fetch the value we set at the collection level. Okay, double curly bracket ID. Okay, the variable is not displayed here because we set that variable at the Spotify album collection levels. That is the difference. The scope of the collection level variables is limited to that particular collection. Okay, now we will suppose I set here value, that is any value. Okay, drth, any value. This is the local variable. Okay, once I select this, it is shown after this question mark, ID is equal to drtht. Okay, this is the difference between collection variable, local variable. Now we will fetch the environmental variable. Okay, environment variable. Now we will try to fetch the environment variables. We set API key. Okay, we'll try to fetch API key. Okay, just without value, displaying without the value, we just fetch by variable name API key. Okay, I will click on this. Okay, we will get the API key. Now our environment is staging environment. Previously we seen that on production environment we set API key as a prod, value is prod. In for staging it is different. Okay, just cursor over. Okay, the value is WAESDT. Okay, now I change the environment staging to production. Okay, it is a production. Now just cursor over. Okay, it is a prod, value is changed automatically. That is the difference and that is the use. When the value
is different, but variable keys are same. That's we said that variable keys on both environments, when we change the environment, automatically values are changed as per the environments. That is the use of the environment variables. Now I changed to no environment. Okay, I changed to no environment. Now it is being a red. Okay, just cursor over unresolved variable, no data was getting, but we set on global level. Okay, we'll see. Okay, the data saved at global level. Okay, on global level we set client ID and client secret. Okay, we'll just try to retrieve that data. Okay, it is a get method. We'll try to retrieve that client secret. Okay, 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 now it is visible. Okay, client secret. Okay, just cursor over on this, we'll get the value of the client secret. Here it is doesn't matter which collections, which environment, because we set it at the global level. The scope is we can fetch this at any collection, any request, and any environment. This is the difference between global variable, environment variable, collection variables, and local variables. Thank you. I hope you like this information. If you like, please like, share, and subscribe. Thank you.